Hi everyone, welcome to Ways Off. So everyone, recently IIC Bangalore, obviously समझते जानते Indian Institutes of Science, that is the what Bangalore, IIC Bangalore, known for the research and discovery. तो रिसेंटली आईआईसी बांग्लोर मध्ये एमती गोटे जिनस बा मैस्ट्रियस जाइंट ग्राविटी होल इंडियन ओशन रे जोटा कि बहुत दिन है अनसल्वड होगी पड़ी there was no such kind of solution, though that was discovered in what earlier in the what I would say close to the mid 20s रे जेतବେଳେ ଆସିଥିଲା बट तार किसी सॉल्यूशन ही नथिला कि हाउ एक्जाक्टली दैट वन फॉर्म्ड तार जो मेकानिज्म वगैरह किसी नथिला दिस माइस्ट्रियस होल कथा जेतବେଳେ आम डिस्कस करूचे तार कौन से प्रकार एविडेंसेस तो थिला बट तार किसी लॉजिक आसी नथिला कि कहीं डेभलप हैला कौन हैला तो रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस से तार कहते कि व्हाट एग्जैक्टली द मेकानिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द दैट इंडियन ओशन रो जो ग्रेविटी होल रही दिस जाइंट होल इज नोन एज द ग्रेविटी होल तो ये ग्रेविटी होल कहीं देखा जाऊँगी एक्जाक्टली दिस इज नॉट लाइक दैट ये एमती होल नहीं कि पूरा जमती कि हाँ पाताल को रास्ता एमती किसी नहीं इट्स ए डिफरेंट आइडिया बस आपको टिके एक्जागरेटेड फॉर्म रे देखा जाइए इमेज रे बट दैट इज अ सिंपल आई वुड से डिप्रेस्ड एरिया ये कौन डिप्रेस्ड एरिया आपको हमें कौन कहवा it's a depressed area that or we are just calling it the giant hole but that does not mean there is a giant hole like that which is looking here in this picture it's a but depressed area okay now that if depressed area jo formation heichi ame jaku koche this is also called as the Indian Ocean Geoid Low this is also called as what Indian Ocean Geoid Low सो ये बहुत बड़ एरिया अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये व्यापिक रही एंड सो दिस इज आवर ग्रेविटी होल सो बिग सो दैट मीन्स आम कहवा कि बहुत सारा साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड से चेष्टा कर विभिन्न टाइम आम कहवा विभिन्न प्रकार रिसर्च करा कि ये जाइंट होल ये कहीं फॉर्मेशन है ताले आपको आम कौन कहवा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन ओशन जियोइड लो देख ये यूपीएससी पचार चांसेस ऑलमोस्ट 90% यूपीएससी जदि आम कह ये डिस्कवरी उपर फोकस करे आईआईसी बेंगलोर जो रिसर्च यूपीएससी फोकस करे यूपीएससी फोकस करे इसरो उपर यूपीएससी फोकस करे आरबीआई उपर यूपीएससी फोकस करे डीआरडीओ उपर तो बेसिकली डीआरडीओ एंड इसरो जहाँ करें यूपीएससी क्वेश्चन पचारि थाए बट नाउ देयर इज ऑल्सो ए ट्रेंड इवॉल्विंग आम देखा कि आईआईसी बेंगलोर से सिग्निफिकेंस बढ़ी बढ़ी जाऊँगी तो ताको आम कहवा दैट मीन्स आईआईसी बेंगलोर कौन यार फॉर्मेशन है बिकॉज ऑफ व्हाट दैट फॉर्मेशन हैज डन बिकॉज ऑफ हॉट magma plumes that is the movement of what ancient movement of ocean and the hot magma plumes तारी जगू ये कौन है फॉर्मेशन होची बोली कहा जाउची ओके सो दैट इज द रीजन बट आम आपको डिटेल से देखा फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंडियन ओशन जियोइड लो इज व्हाट जियोइड अर्थात कौन सेप जमती आम अर्थर जो सेपटा अच्छी तो समस्ते जान कि दिस नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज लिटिल बिट टैप्ड ये कौन होमर टैप्ड ओके सो दैट टैप्ड एरिया इज कॉल्ड एज द जियोइड लो द जियोइड सेप बोली कह जाको आम कहे ऑरेंज सेप ओके सो लाइकवाइज सो दिस इज हाउ मच 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर नाउ सी ये कॉन्सेप्ट आनिला किए नाउ एग्जैक्टली इट वाज डिस्कवर्ड by the scientist that is what Felix Andrews. The Felix Andrews discovered it back in 1948. So this big hole, the gravity hole of Indian Ocean, it was discovered by Felix. In 1980s, here you can see how he is doing the research on that particular point. But तांका research जो थिला तांको पर एते किसी mechanism जଣା पड़ नथला. But here now आमे देखिबा ये जो this particular region is the geoid low. Central part of Indian Ocean from the Kanyakumari to Neiki ame dekhiba south ko ame central part that is the what south of Sri Lanka and I would say east of including some parts of Maldives. So this is the region here you can see the geoid low I have already mentioned here. Now this geoid low jodi ame dekhiba center of Indian Ocean ro chi ako madhe kuha gravity एटी ग्रेविटी बहुत कम अच्छी एंड सी लेवल इज लेस देन 100 सेंटीमीटर्स ग्लोबल सी लेवल सो दैट मीन्स आम देखा ये पर्टिकुलर रीजन को तुम देखिए डिप्रेस्ड एरिया इट्स बट डिप्रेस्ड एरिया ओके सो दैट इज वाई द जियोइड लेफ
लो तो दैट मीन्स आम जिते आम कहूचे ना कि लेट से आम एमती सर्कुलर ड्र कले अर्थ कौन अर्थ पूरा कौन एमती पूरा पिन पॉइंटेड सर्कुलर कि ना अबड़ा खबड़ा एमती थो डिप्रेस थो सो लाइक दिस वन ये देख जदि आम ड्र करते पूरा एमती होता पूरा ये पार्टा एमती ये लगी था सो दैट यहाँ सर्कुलर होता सो ये गोटे डिप्रेस पार्ट तुम देखिए हियर इज द डिप्रेस पार्ट हम देखिपर ओके होप यू आर गेटिंग मी सो लाइक दिस सो इंडियन ओशन जियोड लो जिते आम कहे इट्स अ डिप्रेस पार्ट ये हूँ कौन गोटे डिप्रेस पार्ट दैट इज द इंडियन ओशन रही आम जियोड लो बोली कहे एंड ओबियसली मुझे फेलिक्स एंड्रिक्स कही हियर इज व्हाट लो ग्राविटी ताले ये जगह कौन देखा तुमको लो ग्राविटी एंड ये आउ कौन अच्छी वाटर जो आमर ग्लोबल सी जोटा आम कहे ग्लोबल सी लेवल the global sea level is here less than that means हमें कहबा 100 meters less than 100 meters on an average let's see तो चलो हमें देखिए टिके यार फीचर्स देखे दवा कि what are the features of this geoid low ये geoid low रो फीचर्स कौन रही ओके नहीं जो geoid low रो हमें टिके फीचर्स को देखि देबा एबे तो हिस्ट्री को जेतरा हमें डिस्कस करबा व्हेन इट कम्स टू द हिस्ट्री पार्ट ऑब्वियसली मु डिस्कस करतली कि इट वाज व्हाट डिस्कवर्ड बाय whom that is the Felix Andrews the Felix Andrews that is Venning Menges, a Dutch geophysicist, had invented a device to measure the gravity of the sea, जाको कहा golden calf. This is very important. Golden calf. क्या इधर से तुमको golden calf पचारी परे, geoid low पचारी परे. Okay. ना ये जो golden calf करते ले, because of its color, because of the sailor on the submarines carrying the instruments to remain the motionless, okay, in their बॉन्क ड्यूरिंग द मेजरमेंट तो आपको से मेजर करे पे गोल्डन काफ को नहीं ताहले आम देखा जियोफिजिस्ट किए दैट इज द फेलिक्स एंड्रूज सी ही आपको डिस्कवर करते रिसर्च में करते तो गोल्डन कैफ कौन इट्स आम कह इंस्ट्रूमेंट इट्स बट सिंपल ए डिवाइस टू मेजर द ग्राविटी एट द सी र ग्राविटी को मेजर करने तो बर्तमान ये न्यूज कहीं आसला आईआईसी बेंगलोर जोटा मुझे तुमको कहली ये रिसर्च करके पाई कि जो इंडियन ओशन रे देखा जाऊँगी जो इंडियन ओशन जियोड लो ये एथि फॉर्मेशन है बिकॉज ऑफ द संकेन ऑफ द फ्रैगमेंट फ्रॉम द फ्लोर कहले इंडियन ओशन कॉज्ड बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ द संकेन फ्लो दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट मूवमेंट जो ओके एमती होली से कह मच दैट इज बट ओल्डर ओशनिक आम कह मच ओल्डर तो ये से हूँ कि बेसिकली जी मुझे सिंपल सर्ट कहि कि द रीजन इज द व्हाट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओल्डर प्लेट ओके जियोफिजिस्ट दैट मीन्स आम कह दैट इज बट एट्री घोष ए जियोफिजिस्ट एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ द सेंटर्स फॉर द अर्थ साइंस एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस प्लैनेट्स डेंसिटी डिफरेंस इन्फ्लुएंस इट्स जियोइड ताले से कहूँ जो प्लानेट रो जो सेप रही जो जियोड सेप रही दैट इज ड्यू टू द व्हाट डिफरेंस दैट मीन्स व्हाट से कहूँ कि डिफरेंस ऑफ व्हाट डेंसिटी डिफरेंस इन्फ्लुएंस करुँची तेणु करके कोठी कोठी हमको देखा जो अधिक आम कह सरफेस लेवलटा टिके हाइट रही कोठी कोठी कम तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आम देखा ऑन दैट बेसिस द लेवल एट विच द वाटर वुड बी सेटल ऑन द सरफेस ड्यू टू द व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स देन ता अर्थात आम कह कि आमर जो अर्थ जोटा मुझे सेप कहली ये पूरा एमती सर्कुलर ना कौटे टे तेढ़ा अच्छी ये जो तेढ़ा कौन पे ना आम देखा ये बिकज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द ग्राविटी ओके सो द लेवल ऑफ वाटर आम कह जो अधिक ग्राविटी रही अधिक वाटर सेटल रन कम ना आम फीचर देखा नाउ कम्स टू द व्हाट जियोइड लो जोटा आम देखले जार फीचर्स कौन देखा इट्स अ यूनिक रीजन ये हूँ यूनिक रीजन बट द ग्राविटी ऑफ द अर्थ इज क्वाइट लो ओके and the sea level at the what sea level ro gravity कम अच्छी had also been found that कहते 106 मीटर lower than the global average तो global average level जो sea अच्छी एटी sea level मध्य 106 मीटर lowest than the global average सर्कुलर डिप्रेशन जोटा हम देखले सर्कुलर डिप्रेशन कोठी अछि साउथ ऑफ इंडियन प्लेट टू नहीं कि 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रही ग्राविटी बहुत कम अच्छी है ना एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ कहले अर्थ चारिआडे जो ग्राविटी मेजर करके आसवा ओशन रे हियर इज द लीस्ट आम कह ग्राविटी ये बहुत कम ग्राविटी देखा जाए तो ग्राविटी होल्स वर्ल्ड दैट इज बट आम कह सिंपल डीपेस्ट ग्रेविटेशनल एनोमली ये ग्रेविटेशनल एनोमली ऑफिशियली नोन एज द इंडियन ओशन जियोइड लो ड्यू टू द व्हाट लोअर लोकल ग्रेविटी तो ये सी लेवल कम रहिबो
what done. The sea level in this Indian Ocean Geoid Low is up to what 100 sea, that is what 6 meter lower than the global average. तो जेहेतु to low gravity अछि, because of the what, due to the low gravity, the sea level also मध्य हम देखिबा, that is what down or lower than the 106 meter. ताले से जो गैप टा रहिला, से गैप टा को के फुलफिल करो, से वैक्यूम को, ह्यूज वैक्यूम, that is fulfilled through the air. That is fulfilled through the what, air. That means in this region the air thickness is highest in any region of the ocean. दुनिया रे जेते ओशन होची सब thickest air तुमको एठी देखा जिवो, air thickness अधिक देखा जिवो. Okay, so develop a circular surges due to the anomalies हमको देखा जिवो. That means ये area रे हम कहबा water being displaced. ताले हम कहबा as the back of the involves circulation suggests that due to the lack of anomalies about 100 cubic kilometers, that means 25 cubic miles, the water is being displaced. Okay, fine. Now IIT Bangalore kono coach कि यार formation को आसिबा. Now comes to the formation. IIT Bangalore कहबा कथा कि भाबो about 140 million years ago. तो ये starting हम कहबा clock IIT Bangalore जो research करी चीज 140 millions to नहीं कि present. आईआईटी बैंगलोर कहबा कथा कि ये जो इंडियन ओशन जियोइड लो फॉर्मेशन है ये केमिति ना एथि पई फॉर्मेशन है भाबो ये हला अर्थ. जदि हम देखबा केमिति फॉर्मेशन है हम टिके देखिबा. भाबो एथि जो भाबो जस्ट कि इट इज 120 to 140 million years ago. India used to be here. Indian plate एथि थिला. When Indian plate was moving like this, जेतले मूव करूथला in a particular region रे किछि magma थिला, किछि magma थिला. Okay, and a plate small like plate भलिया थिला. That is what upwelling of light magma. ध्यान से सुनबो एठी कोन हैला, upwelling of what, upwelling of light magma displace the heavy magma को displace कर देला है ना. तो ए जगह डिस्प्लेस हो गला किसी हेवी माग्मा एंड एठी अपवेलिंग हैला कोन लाइट माग्मा. सो बिकॉज ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हेवी माग्मा थ्रू द अपवेलिंग ऑफ और द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लाइट माग्मा, से जो डिस्प्लेसमेंट हैला ता द्वारा ये डिप्रेशन फॉर्मेशन हेछि बोली कि कहू जे आईआईसी बेंगलुरु कहता. तो आमे देखिबा बेति ताको देखि देबा. नाउ कम्स टू द स्लाइड. आईआईसी बेंगलोर जो कहवा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टीम कहवा कथा ये माने केमती कले सुपर कंप्यूटर की यूज कले. सुपर कंप्यूटर अनुसार बा मॉडलिंग आम कह प्रोसेस अनुसार ग्राविटी को ये कहले कि एक्चुअली ये ग्राविटी बहुत कम अच्छी कौन पे ना 120 मिलियन इयर्स एगो जो इंडियन प्लेट ब्रेक होता ऑस्ट्रेलिया ठू बा गोंडवाना ठू बा आम कह आफ्रिका ठू तापर ये कलिजन हम कलिजन है द्वारा हिमालयन फॉर्मेशन है. किंतु हिमालय फॉर्मेशन हवा पूर्वरु as a fragmented of that plate ये गोटे कार आफ्रिकार फ्रैगमेंटेड सो कॉल्ड द टेथियन स्लैब कारण सेठी तमे जानछ टेथिस सी थिला. टेथिस सी टा कोन जेतले कंप्रेस्ड हे गेला ता द्वारा फोल्डेड हे की फॉर्मेशन हला कि हिमालय. ताले हम कहबा दैट मींस दैट टेथिस स्लैब्स वेर सोप्ड डीपर इनटू द अर्थ मेंटल. ताले टेथिस स्लैब टा कोन हला दैट वाज मूव्ड to the deeper of the mantle को जेतले गेला that displaced some of the material trapped in it's known as the African bluff. This is very important. Tethys sea जेतले मूव कला ता द्वारा अफ्रीका पाखरे किछि मैटेरियल अफ्रीकन प्लेट तळे जोटा ट्रैप हे किथला जाको कहा जे अफ्रीकन ब्लॉफ. ए कॉन्टिनेंट साइज बबल मैग्मा thousands किलोमीटर बा 600 miles under the East Africa मूव करिगला. कोन हे गेला that displace हे गेला. Because of that displacement by 20 million years ago that relatively light substance rose towards the surface in the plums. जो displacement हैला से displacement को fulfill करिया पे light magma आसेला. Okay, so together with the mantle structure near the geoid low, those plumes are responsible for the gravitational anomaly. तेणु जो ग्राविटी वर्तमान कम दिखाउछि एथिपई बिकॉज ऑफ द लो डेंसिटी ऑफ माग्मा जो अपवेल हैला बा प्लम्प हैला टुवर्ड्स द सरफेस, दैट इज द रीजन. दैट मींस टेथियंस प्लेट जाको हम कहूचे स्लैब्स तार मूवमेंट हैला एंड अफ्रीकन ब्लॉफ दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. ये तुमको पचर अफ्रीकन ब्लॉफ कोन टेथिस स्लैब्स कोन आम देखुचे आर देख जियोइड लो कोन ताको आमे कोन कहूचे से कोठी अछि तार शेप केमिति केते डिस्टेंस रोछि केते मिलियन इयर्स एगो फॉर्मेशन हेतला
गोल्डन कैफ कौन तो बहुत सारा क्वेश्चन इथरो आसी गोल्डन कैफ कौन जियोइड लो कोठी अछि किए ताकू देइतले कांसेप्ट को इंस्टीट्यूट वर्तमान नहीं कि आसी एटा वाटर लेवल एठी केमती अछि विंड अछि कि नहीं सो दिस ऑल अबाउट आम को डिस्कस कले ओके सो दिस इज हाउ तो होप के तुम को जदि वीडियो लाइक आसो सब्सक्राइब करबो शेयर करबो एंड हाँ आई विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर को जेते मात्रा शेयर करो सो दैट दिस सॉर्ट ऑफ नॉलेज बाकी मान पाखे पहुँचो एंड दैट विल ऑटोमेटिकली इंस्पायर मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस सो थैंक यू एवरीवन कीप वाचिंग थैंक यू ऑल